Can you see this now? Yes. Accessing IO device. This slide. Can you So, see? but there still is a noise. Noise maybe in your system only, or it is happening with everybody's system. Yes, sir, everyone's. Huh? Is it with everybody's system? Yes, sir, I can hear it. Yes, sir. Okay, I think it's a fan's sound. Let me switch it off. Now is it gone? Yes. Then it was fan's noise. Okay, so then you mean to say I have to sit without fan? No, sir, you can turn it on. But then in that case, you will be, feeling difficulty in hearing. Anyway, now it's fine. Yeah. Huh? Noise. Yeah. Yes, Okay. sir, it's fine. So, yeah, fine. So this arrangement that is depicted on the slide that you have already seen, right? What all you are seeing at your screen? What you can see on your screen? Accessing IO devices, PPT slide. Just tell me for slide with the red color boxes. Yes, sir. Hello. Anything else? Can you see a few lines written in below it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you see a few lines written below it? Okay, fine. Then it's fine. Okay, so this kind of arrangement and this mouse you can see? No. Yes or no? Yes, sir. Yes. Huh? Yes, sir. Can you see this cursor? Fine, perfect. Then it's fine. So this kind of arrangement you guys have already seen. So generally there is a processor, there is a memory, and then there are a number of IO devices. So the idea is there will be a single bus, and that single bus will be having all the devices connected to it, be it processor, be it memory, be it multiple IO devices. Now there are two ways, and of course this bus consists of three set of signals. So one is the address, another is data, another is control signal. Data is fine, but when we are talking about address and control system, there is something to understand. You know how data transfer happens between memory and processor, right? You have seen those operations. So you identify every cell of memory by its address, and then you push the data or pull the data, or you can say in the common term, read the data or write the data in that cell. So IO devices can be accessed in two ways. One, it can be assigned the addresses same as your memory cell. So maybe one memory cell can be one IO device, and likewise. So in that way, it is really simple to operate. You are free to write the code the way you want, and overall handling becomes simple, right? So this particular idea is termed as memory mapped IO, because your IO is mapped over memory. Does it make sense? Is it okay? Another idea is you specify a separate address space for IO transfer. In fact, you have special instructions. So while you are taking this as a memory mapped IO, the instructions are going to be same.
as you have already studied. But then if you have separate instructions for IO transfer, in that case, this is called IO mapped IO. Right? The advantages and disadvantages are there for both memory mapped IO and IO mapped IO. The memory mapped IO, it is simple and easy to use. You don't need to have separate instructions in your instruction set. In fact, there are instructions in instruction set, but a user don't need to go through that. And whereas in IO mapped IO, the address lines requirement will be less because the memory capacity will be anyway higher in comparison with the number of IO devices. So maybe your address line can be of 16-bit, 16 line address, 16-bit. That means you will be having 16 lines in your address bus. Whereas, your IO devices won't be maybe more than 256. So in that case, you'll be having only 8 lines. So this is one advantage. In fact, when I say this is worth mentioning that it does not mean that we have separate lines for IO and separate lines for memory transfer if it is IO mapped IO. It is only few control signals that that tells the system whether it is a memory transfer, it is a data transfer from memory into memory, or it is a data transfer from IO devices. Does it make sense? Does it make sense? Yes, sir. Fine. So there is a signal, a control signal on the bus indicates that the requested read or write transfer is an IO operation. When this signal is asserted, the memory unit ignores the requested transfer and IO devices examines if this is my address, and then if it is my address, I should take the data or I should give the data. Whatever may be the case as per the requirement, right? Is it okay? Yes, sir. So I just want to show you, I don't know if I can do that here or not. Page. Can I write it here? So, if there is, just as an example, if there is a data transfer to happen in memory mapped IO system, how will it look like? Can somebody tell me? Can you give me an instruction by which the data transfer will be happening? Move. Sir, move. No? Sir, What are you saying? Yes or no? Move. Yeah, exactly. So it will be a move. I don't know if I can get a pen here to write. Yeah, I think no. It's move. No, it will not. Cannot be used for writing. If there is a pen available. Insert line. Rotate. Okay, so it will be like move.
buffer register to some register. So there will be a buffer with the device that you already know. So move buffer and then the register towards you are moving, or move general purpose register to the buffer, right? So I just want to write it. I don't know if I can write it or not, but I think you guys would have understood what I'm trying to say. So yeah, so these things I think I have already discussed. Yeah, fine. So this is now schematic, you can say, by which these devices are actually connected. You can say the hardware schema of the IO devices to the bus. So here you can see three things, in fact 4: address decoder, control register, data and status registers. These work as IO interface. Do you understand what do we mean by interface? Do you understand what do we mean by interface? So interface is something that actually ensures any kind of transaction between two entities should be seamless. So there are 4 things. In fact, you have seen 3, but these are actually 4: address decoder, control circuit, and data and status register. So address decoder enables the device to recognize the address, as name indicates. You can understand this very well. Whereas your control circuit gives the necessary signal, whether it's an IO device to be transferred and all that. And then data and status registers. So data register is something that is actually keep taking data from input device or from the processor side to give input device. And then there will be a status register that will be used for various flags and all. Right? So any confusion about it? Sir, could you repeat the control circuit part once again, because your voice got cut out? Can you speak up again, please? Sir, could you repeat the control circuits part again? Your voice got cut out. Okay. So, I mean, as we know that this bus has got, 3 parts: address lines, data lines, and control lines. So control lines actually are used for different kind of device enabling, signal assertion, and things like that. So for example, whether it is a read signal or it's a write signal. So all these kind of things are actually ensured using control circuits. So there is a separate chain of control lines that is connected through control circuits, and your CU issues the signals for that, and your devices are actually act as per the requirement. So you can say it's a kind of nervous control system for your processor, your system. So that generates signals here and there, and then, for example, if you want to lift your hand, a signal should come to your hand. Similarly, these control lines are actually, carrying those signals. Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Let's move ahead. So, generally, the rate of transfer to and from IO devices is slower than the speed of processor, that you already know. Processor performs a lot of jobs. So you need some mechanism by which you can synchronize the data transfer between them. So for that, there are ways to do so. One very simple way is program controlled IO. So in program controlled IO, what happens? There is a status flag from the device that is actually giving the data or that is actually taking the data. Based on that
the condition of that device, that flag is turned on is or turned off. So when it turns on, that means either it is data to send, if it is sending some data, or it has data to receive. So based on the flag, we decide whether, the processor learns that device is ready to make some transfer or not. And because you are not aware that when these flags will actually come on, so there is a program that continuously, or you can say repeatedly, keep on checking the status of the flag. This particular process is called as polling of the IO devices. So this polling of the IO devices actually is the key of the program controlled IO. So processor keeps on polling devices, and as and when it receives some information that there is some data available or there is some device available to send the data, processor actually performs that kind of operations. But here you can see that there is actually processor keeps on checking whether in these situations are available or not. So that consumes a lot of effort from processor. Not only that, it keeps on busy. So processor is less efficient in that case. So to solve that problem, there are two more ideas that come into picture. Those are interrupts and direct memory access. We'll discuss those things in detail, interrupt just now and direct memory access little later. But by now, are you able to appreciate what I'm trying to say? Sir, why do we need this part when we can achieve the synchronization with the buffer? But how processor will know that it has to take the data or it has to give the data? Buffer is just... That would defeat the purpose of the buffer itself if we're using a program to synchronize in that way, because then the processor would run at the speed of the device we're connecting to it if we're using the first method that you mentioned. Buffer is just ensuring one thing, that it is actually some place where data has to be put in, right? Sir, what could you repeat? For a transfer happen, there is some place where data has to be put in. Suppose you are pushing a keyboard's key. So is it that you are always pressing the key? It may happen at some point of time, but is it happening like this? Sir, I don't understand what that means, sorry. Suppose you are using your keyboard. So are you continuously pressing some key over keyboard? Sir, I mean, using the keyboard means we're typing something, right? Yeah. Yeah, so I am pressing a key if I'm using my keyboard. It's not continuous. So there is some, time gap between pressing the keys. And whatsoever keyboard is actually collecting out of your pressing the key, that it will be putting somewhere. So processor will take it from there. That is fine. And that is one place that you call buffer. But when it has to be performed, that is another question. You're getting my point? Yes, sir. So there are two separate things, look. One is where to keep that data from where it can be read, or where to keep the data from where it can be written. And second, when it has to happen. So this synchronization is actually answering this when question. It is not answering where question. This is synchronization on the side of the processor. Yeah, it is synchronization on the side of processor. Okay, sir. Right?
So then, Yes, sir. I mean, in program controlled IO, it keeps on checking whether flag is ready to give the data. I mean, flag is there. That means buffer is having some data or not. But then it is not a very efficient process. Efficient in a sense, I mean, it is actually consuming processor cycles and time in that. And as probably you by now, you would have understood that processor cycles is an important resource. You cannot waste it like this. Right? Is it fine? Is it fine? So then we use something called knock-knock approach or interrupt approach. So interrupt approach is very simple. Don't ask processor to check in every time. Just interrupt whenever processor has to do something. So this last line is important. Processor, and that actually I was telling about, processor can perform other useful tasks while it is waiting for device to be ready. Right? Is it okay? Yes, And sir. for this, there is a bus control line called interrupt request line is dedicated for this purpose. And there is a hardware signal that carries that signal that is called interrupt. So just look at this, how this actually works. So, I mean, it's like this. You can see this, that a program is running line number 1, line number 2. At line number I, there is a interrupt from a device comes. Processor control moves on to interrupt service routine. So then question comes that what is the interrupt service routine? So interrupt service routine is something, some kind of, particularly in this case, it's a data transfer process. So probably that move R0 data in or move R0 data out, that kind of instruction may be there. Or there will be some program, small subprogram that has to be executed for which the interrupt has come. So at this place, line number I, it will execute the interrupt service routine, but before going to this, there will be a context with this program. So that context will be saved somewhere. This execution will be completed. It will come back. The saved context will be revived and it will complete the execution. Does it make sense? Yes, sir. So probably by now you would have appreciated that whenever it will reach at I, the program counter will be having address as I plus 1. But this interrupt will change the program counter content, and that will actually give this address value wherever this is stored to program counter, and eventually this execution will start. And because it has to come back at the same location, so this content has to be saved somewhere. Right? You're getting my point? Yes, sir. आपने जो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट आप कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेन प्रोग्राम यहाँ पर थे आपको इसके अगले एड्रेस पर वापस आना है, और ये कहीं लिखा हुआ नहीं, इट्स नॉट अ प्रोग्राम जिसमें जंप इंस्ट्रक्शन था या कॉल इंस्ट्रक्शन था जिसमें आपको ये मिल जाने वाला है. तो इसका मतलब कि ये वाला एड्रेस आपको कहीं स्टोर करना है. ये स्टोर कहाँ करेंगे? तो स्टोर, इस तरह की चीजें स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन सी जगह है? प्रोग्राम काउंटर. हाँ, कौन सी जगह हम इस तरह की चीजें स्टोर करते हैं? प्रोग्राम काउंटर. नहीं, प्रोग्राम काउंटर के ही वह कंटेंट को स्टोर करना है. प्रोग्राम काउंटर तो एक रजिस्टर है जिसमें आपने ये वाले के बाद जब ये वाला वैल्यू स्टोर था, आपने उसे हटा के ये वाला वैल्यू स्टोर कर दिया. अभी उसे हटाया तो ये वाला वैल्यू से हटाने से पहले ये स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं.
ताकि जब यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो जाए, यहाँ तक का एग्जीक्यूशन जब हो जाए तो वो इस लोकेशन पर वापस आ सके। अब बात समझे मेरी? हाँ, you guys are able to? Yes. हाँ, बट ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? Yes, sir. हमको उस लोकेशन पर वापस आना है, इसके लिए हमको वो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट कहीं सेव करने पड़े और इंटरप्ट सर्विस रूटीन पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद उस प्रोग्राम काउंटर में वो वाले कंटेंट को वापस लाना पड़ेगा, तभी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। प्रोग्राम काउंटर वहां जाएगा और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। इतनी बात समझ में आती है आपको कि नहीं आती? Yes, sir. Any confusion about this? Because this is an important point. आपको इंटरव्यूज में भी पूछेंगे शायद वो लोग, अगर इसके बारे में पूछेंगे तो। हाँ, नहीं सर, आ गया ठीक है। ये नहीं आया समझ में या नहीं आ गया? सर आ गया समझ में। ठीक। So we save these program counter contents at stack. So subroutine performs a task that is required by calling program. I have already told you that we call as interrupt service routine. Okay, so it is showing, this slide is giving you the difference between call and ISR. So, I mean, one important point is that this subroutine is actually the part of, if you are using call instruction, that subroutine is the part of main program in a way. तो उसमें उसके variables भी use हो रहे हो सकते हैं, कुछ वगैरह हो सकता है। Interrupt service routine is entirely different. और ये भी हो सकता है कि इसके जो टेकर्स हैं वो दूसरे जॉब्स हैं, दूसरे आपके सब प्रोग्राम्स हैं, दूसरे आपके टास्क हैं, तो इससे इसका कोई कनेक्शन होगा, इसका चांस बहुत कम है। तो जब भी ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लिए जा रहा है, आपको इसका पूरा कंटेक्स्ट सेव करना पड़ता है, जो मैंने आपको कहा था। And this is talking about the saving the context. So conditional flag, code flag आप सेव करेंगे, प्रोसेसर रजिस्टर सेव करेंगे, इनको आप स्टोर करेंगे कहीं ना कहीं, ताकि जब आप वापस आए, क्योंकि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं आपके सिस्टम में, तो उसमें क्या चीजें होंगी, तो कुछ आप रजिस्टर्स हैं, उनमें कुछ वैल्यूज हैं, वही आपका कंटेक्स्ट है, उनको आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ये आपको कॉल में नहीं करने की जरूरत है, बट इंटरप्ट में ये करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप वहीं से शुरू कर सकें जहां पे आपने छोड़ा था। राइट? अब इसमें एक जो प्रॉब्लम आप कह सकते हैं वो ये है कि सेविंग और रिस्टोरिंग रजिस्टर जो है वो मेमोरी ट्रांसफर उसमें इन्वॉल्व होता है, और वो भी आप स्टैक में स्टोर करते हैं एक्चुअली, लेकिन इसकी वजह से आपका एग्जीक्यूशन टाइम जो इनिशियली एंटिसिपेटेड है वो उससे बढ़ जाता है। सो इट इंक्रीजेस द एग्जीक्यूशन टाइम एंड इवेंचुअली दिस लीड्स टू सम डिले एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट लेटेंसी। अब इससे कम बचने का तरीका इतना ही है कि आपको जो भी सेव करना है उसका मिनिमम पोर्शन सेव करिए। अब ज्यादा सेव करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो जो मिनिमम इंफॉर्मेशन है उसको सेव करना है, ये इससे बचने का तरीका है। Sir, what do we mean by the minimum amount of information इधर, like कौन सी इंफॉर्मेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं? देखिए, उसमें कुछ चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, सेव इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आपको प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करनी ही पड़ेगी, प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर्स आपको स्टोर करने ही पड़ेंगे, उससे आप बच नहीं सकते, तो मिनिमम है। उसके अलावा आप सारे रजिस्टर सेव करेंगे कि आप वो खाली जनरल पर्पस रजिस्टर सेव करेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपके रजिस्टर्स कौन से यूज हो रहे हैं खाली वो सेव करना, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये जो स्टेटस रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर है ये तो आपको सेव करने ही पड़ेंगे। फाइन? यस सर। सर बट अगर नेसेसरी हमारा सिर्फ प्रोग्राम काउंटर और स्टेटस रजिस्टर है, तो बाकियों का
स्टोर करने का हमको जरूरत क्यों पड़ेगा? ठीक है ये बात? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो यस सर। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जैसे एक्यूमुलेटर शायद सेव करना ही पड़ेगा, एक्यूमुलेटर से आप नहीं बच सकते सेव करने से, लेकिन आपको और जनरल पर्पस रजिस्टर सेव करने से आप बच सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको कोड में कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सर इस तरह के कुछ ट्रेड ऑफ्स। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि और हमको सेव करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? डेटा फिर आप कैसे रखेंगे? उस समय क्या डेटा चल रहा है उसका कैसे पता चलेगा? स्टेटस रजिस्टर तो आपको ये खाली बताने वाला है कि उसमें ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं, कैरी है कि नहीं, इतना ही तो बता सकता है। डेटा कहाँ से आएगा? बट देन उसमें हमारा मिनिमाइजिंग थोड़ी होगा कुछ, वो तो जितना है उतना डेटा हमको स्टोर करना ही पड़ेगा। आप 16 रजिस्टर्स सेव कर सकते हैं, आप खाली 4 रजिस्टर्स में यूज कर रहे हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपके पास मान लीजिए 16 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, आप ऑल 16 यूज करिए और ऑल 16 सेव करिए, दैट इज पॉसिबल। आप उसमें से 2 ही सेव करिए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज एक्चुअली पॉसिबल। सर हम ये कर सकते हैं ना कि जैसे सपोज 9 रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, ओके, सो हमें उनको सेव करने की जगह हम उनके जो भी डेटा है उनको मैनिपुलेट करके ऐसे करके कि 2-3 ही रजिस्टर में स्टोर कर दें। ये आपको नहीं पता होता कि इंटरप्ट कब आने वाला है, तो अगर आपने इनिशियली ये डिसाइड नहीं किया है कि आपको कौन कौन से रजिस्टर सेव करने हैं, हाँ, तो फिर आप ये नहीं कर सकते। हाँ, उसमें इतना ही कर सकते हैं कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन आ गया, इंटरप्ट आ गया, उस समय जो है वो उतना मिनिमम अगर हो सकता है तो अच्छा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर इंटरप्ट तो कभी भी आ सकता है, तो स्टार्टिंग से ही हमें कम ही रजिस्टर्स यूज करने चाहिए। So you are muted. हेलो? Yeah, now. हाँ, इंटरप्ट कभी भी आ सकता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप इंटरप्ट आने के टाइम में आपने जितने रजिस्टर यूज किए हैं उसको आप इंश्योर जरूर कर सकते हैं कि उनको आप सेव करते हैं। आप एकदम लैविश अप्रोच में भी जा सकते हैं, सब कुछ भी सेव कर सकते हैं, फुल कंटेक्स्ट सेव कर सकते हैं, या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा उसको हम सेव करेंगे, बाकी तो ट्रांसफर वाला डेटा है उसको हम वापस ला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। राइट? सो आई मीन दैट इज एक्चुअली समथिंग लिटिल प्रैक्टिकल, जब आप इसको कभी करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है? इज इट ओके? Yes, sir. तो अभी इंटरप्ट अगर हो गया तो फिर आपको वो डिवाइस को बताना पड़ेगा कि ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिकॉग्नाइज हो गई और ट्रांसफर हो सकता है, तो उसके बाद फिर वो ट्रांसफर होगा।
अब इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की बात है। आपकी मल्टीपल डिवाइसेस क्योंकि कनेक्ट होगी प्रोसेसर से, और इसमें हो सकता है कि सारी इंटरप्ट जनरेट कर सकती हो, या हो सकता है कुछ उनमें से इंटरप्ट जनरेट कर सकती हो। तो ये इंटरप्ट कैसे होगा, इनका क्या ऑर्डर होगा, आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई अभी डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है तो दूसरी इसके बाद ही करेगी, ये तो कभी आ सकता है। तो उसमें दो तीन चीजें समझने लायक इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट हो रहा है। सब प्रायोरिटी होनी चाहिए। एग्जीक्यूट, हाँ, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रायोरिटी एज वेल। हमारे पास एक से ज्यादा इंटरप्ट्स होते हैं और उनकी प्रायोरिटी एक के ऊपर दूसरी होती है, और उसके ऊपर मास्किंग होती है इंटरप्ट्स की, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो जो मास्क्ड इंटरप्ट होते हैं और जो अनमास्क्ड इंटरप्ट्स होते हैं, उनके बेसिस पर ये चीजें डिसाइड होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं प्रोसेसर को समझने के लिए। तो इसमें प्रायोरिटी एंड पोलिंग, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो interrupt service routine can poll IO devices connected to the bus, and first device with IR 0 equal to 1 and 1 that is serviced. और एक सिंपल सा पोलिंग मैकेनिज्म है, वो सबसे जाके पूछ सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें कि भाई आप में से किसने ये इंटरप्ट जनरेट किया है, और उसके बाद अपना खुद आइडेंटिफिकेशन कर सकती है हमने किया है कि नहीं किया है। तो उसके बेसिस पे एक सिग्नल भेजा जा सकता है जो कुछ 4 से 8 बिट का होगा, और उसके बेसिस पर ये आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। दूसरा ये है कि मल्टीपल आईओ डिवाइसेस हैं, तो उसमें एक से ज्यादा कनेक्ट होके वो कर सकते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो उसमें क्या कंडीशन है, कैसे उसकी टाई ब्रेक होगी, स्लाइड वापस आ गई शायद। प्रोग्राम करते हैं तो प्रायोरिटी लेवल इसका एक रहता है, इसमें लो प्रायोरिटी डिवाइसेस को हम नीचे इसमें रखेंगे, हाई प्रायोरिटी डिवाइसेस को हाई इंटरप्ट उसमें रखेंगे, और कुछ इंटरप्ट्स ऐसे होंगे जिनको हम बिल्कुल, वो इंटरप्ट आ गया तो सब कुछ छोड़ देंगे। जैसे ट्रैप एक इंटरप्ट है, जिन्होंने 8085 प्रोसेसर पढ़ा है उन्होंने ट्रैप इंटरप्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो जब भी ट्रैप इंटरप्ट आता है उस समय फिर जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा हो उसको रोक के और उसके एग्जीक्यूशन को पहले किया जाता है। ऐसा उस कंडीशन में होता है जब आपके पास जो कंडीशन है वो बिल्कुल अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल एज एन जैसे पावर फेलियर हो सकता है, या इस तरह की चीजें जब भी हो सकती हैं। तो उसमें फिर उस कंडीशन में जो इंटरप्ट होगा वो सारे इंटरप्ट्स को बाईपास कर देगा या उनको वो कर देगा। उस कंडीशन में होगा क्या, यू आर ऑलरेडी विद इन एन इंटरप्ट एंड सपोज ट्रैप कम्स। अच्छा, पहले मास्क और अनमास्क इंटरप्ट्स की बात कर सकते हैं। इंटरप्ट मास्क होते हैं, यानी अगर एक इंटरप्ट 1 है, इंटरप्ट 2 है और इंटरप्ट 3 है, एंड इट इज लाइक दिस दैट they have values something like high in priority, high in. You are muted.
Hello. Yes, sir. Yeah, sorry guys. Okay, so I think let's stop here itself then. I mean, it's already interrupted a lot. शायद चले भी गए होंगे ये सोच के, तो ठीक है फिर कल हम लोग बजे की सर आपकी आवाज कट रही है. में इसके आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है. हेलो. Sir, कुछ couldn't आज understand anything. यहीं रुक जाते हैं, फिर कल 4 बजे की क्लास. Okay. Okay, sir. I think I should try. सर आप यही कहना चाहते हैं ना, कल 4 बजे स्टार्ट करेंगे. Let's here.